जना आ बाजू से अच्छा ये आ चेयर જોઈએ ચેર જોઈએ તો પછી લઈ જશે ના આ વાલી લાઈને કે પેલું બેસવાની સીટ જોઈ પેલી સીટ જોઈ કે ચેર જોઈ પેલી બેસવાની સીટ બેસવાની જમીન પર બેસવાની. Oh, okay. Let me see if I find that. No. Can you see it again? બધાને જોઈ તમને પણ લઈ ગયો No, I don't need it. બેસવાનું ફાવે ને તમને મોટી ચેર જોઈએ તો બી ચાલશે વિજયભાઈ કઈ નહીં આમાં જરૂર પડશે તો થેન્ક યુ. મને બોલ્યા નથી તમારી પૂજાની થાળી પૂજાની થાળી જોઈ લો. હા પૂજાની થાળીમાં જો ચોખા છે, કંકુ છે, હળદર છે, સિંદૂર, હા અબીર ને ગુલાલ, નાગરવેલના પાન, સોપારી, ફળ ફ્રૂટ, કલશ, કલસાજી, બે આચમની પંચપાત્ર, ફૂલ, ફ્લાવર. બરોબર? Flower લઈ લઈએ. અહીંયા છે ને ફ્લાવર. તમારે આ બધી બાજુમાં છે. Oh. चलो भगवान की कृपा कि बहुत बरस बाद the first time we are lucky. We are lucky. आचमनी पंचपात्र છે બાજુમાં છે. शुरू करिए. बोल गजानन गणपति महाराज की जय. श्री अम्बे माता की जय. श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय. श्री राधा गोविंद भगवान की जय. श्री सत्यनारायण देव की जय. जय श्री कृष्ण. नमस्ते everyone. Today we have Shri Satyanarayana Puja followed by Sandhya Aarti and Mahaprasad. So now we are going to start the puja. Om Apavitraha Pavitro Va Sarvavastham Gato Vipa Jasmaret Pundarekaksam Sabahya Abhyantaraha Suchihi. Om Pundarekaksha Punadama Om Pundarekaksha Punadama ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु मां त्रण वखत आचमनी કરી રાખો. ओम केशवाय नमः स्वाहा पिबीज. ओम केशवाय नमः स्वाहा ड्रिंक. ओम माधवाय नमः स्वाहा ड्रिंक.
ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ड्रिंक इट। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा, क्लीन योर हैंड्स। ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा, हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादस्वा मारुतः, वृष्णिमातरः शुभं जावानो वीरथे भुजगन्मयः, अग्निजिह्वा मानवः, सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा, अवसादमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनो वीर्यसेमहि देवहितं जलायुः, शतमिन्दु शरदो वन्ति देवा, जत्रान शक्राजरसं तनूणां पुत्रासो जत्रापितरु भवन्ति मानु मध्यारे रेखतार्युगन्तोः, अदितिर्द्यौवदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन आदितिर्जातमदितिर्गणित्वम् द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरावः शान्तिरौहरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः। अब नीचे जाने वाले जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम सुशांतिर्भवतु, ओम सुशांतिर्भवतु, ओम सुशांतिर्भवतु। जोड़ीने पहला गणपति जी नमस्कार करी राखो। ओम भगवते श्री महागणपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यां नमः, ओम माता पित्रे चरणकमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधानो भगवती महालक्ष्मी सहित श्री सत्यनारायणाय नमः। ततः हस्ते संकल्पमादाय जमना हाथમાં તમારું નામ ગુરુજી વિનુભાઈ। તો વિનુભાઈ જમણા હાથે છે ને એક જ ફૂલની પાકડી પકડી રાખો। કેવું તમને? હા રાઈટ। થોડું ચોખા થોડું પાણી। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हाँ थोड़ा चोखा राइस थोड़ा चोखा ने पानी रखो, थोड़ा पानी संकल्प के। हाँ जल भी लो तो चाहे, ओनली वाटर। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शोकाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 3
वक्त बोली जाओ, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः. Now on behalf of you, I am going to tell sankalpa in Sanskrit language. ओम विष्णुर विष्णुर हरिर हरिः. ओम अद्य वैशाखे मासे शुक्ले पक्षे पूर्णिमायाम तिथौ वासरः वासरस्तु सोमवासरे. आज सोमवार है ना. सोमवासरे अमुक अमुक गोत्र गार्ग्यस्य गोत्रस्य तुम्हारा नाम जयसुख भाई महोदय स्वपत्निकाः देव्याः से ऑल फैमिली मेंबर्स ने तुम्हारा गोत्र काश्यप ना. काश्यप गोत्रस्य तुम्हारा नाम ले लो. बंधु फैमिली मेंबर नु नाम स्वपत्निकाः सकल कुटुंबस्य सकल परिवार सहितस्य श्रुति अस्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा राजसभायां तद्द्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभ आयु कीर्ति प्राप्त्यर्थम तथा च मम जन्म कुंडली चंद्र कुंडली वर्ष कुंडली मध्ये सकल अरिष्ट ग्रह प्रभाव निवारणार्थम शुभ ग्रह फल प्राप्त्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनोपनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम भगवान श्री सत्यनारायण देवता प्रीत्यर्थम यथा ज्ञानेन मिलितोपचारेण पूजन पूर्वकम तत्कथा श्रवणम चाहम करिष्ये. ये जो एम्प्टी वाली प्लेट है ना आमा मुख्य. Then again hold one spoon water like this one. हाथ लग spoon. I think તમે થોડો તમે આ બાજુ તમે આ લેફ્ટ બાજુ બાહ્ય બેસવાનું. આસન પેલા આસન यम यम आसन स्थिर करना. राइट. नियम आसन. एक चमची पानी पकड़ी. तदंगत्वेन मीन्स पार्ट ऑफ द सत्यनारायण पूजा. प्रथमम गणपति पूजनम कलश आराधनम नवग्रह पूजनम दीप पूजनम दिग्रक्षणम चाहम करिष्ये. હવે ભાઈ કેવલ તમે કરો કેવલ જશો ભાઈ કરશે. હાથ જોડીને 10 દિશા જે છે ને 10 ડાયરેક્શન નમસ્કાર ઇન ટુ ઓલ 10 ડાયરેક્શન્સ है ना. ओम नमो रुद्रेभ्यो जय दिव्ये कांबरकमेकवहातेभ्यो दशराजर दश दक्षिणा दश प्रदेशर दशोदीचर दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो स्तुतेनो बन्धु तेनो मृडयन्तु ते चन्द्रखमो जिष्णुनो दक्षिणमेखां जन्मे दधमः. 10 દિશામાં આકાશ અને પાતાળ. ओम तदंगत्वेन जस्ट रिंग द बेल. ओम आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां घंटानादं प्रकुर्वेत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत. चलो थोड़ा घंटी बजा. ओम आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां घंटानादं प्रकुर्वेत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत. घंटाમાં કોણ રહે? ગરુડજી. કોના ભાષા? ગરુડજી. ગરુડજી કોણ? The vehicle of Lord Sriman Narayan. Right? ગરુડજી. પછી શંખ છે અહીંયા શંખનો નમસ્કાર કરી રાખો. ઓમ પાંચજન્યાય વિદ્મહે પવમાનાય ધીમહિ તન્નો શંખઃ પ્રચોદયાત. ઓમ શંખસ્થ પદ્માવત્यै નમઃ. પછી અહીંયા દીવા છે ને દીવો देवानु नमस्कार કરી રાખો. ओम भो दीपा ब्रह्म रूपस्त्वं कर्म साक्षी भग्नकृत जावद पूजा समाप्तिर् स्यात् तावत्त्वं सुस्थिरो भव. या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. દીવાનું સ્ત્રોત કોણ છે? ભગવાન સૂર્યનારાયણ આકાશમાં. તો ભગવાન સૂર્યનારાયણને પ્રણામ કરી રાખો. ओम देय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः
केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुरधृत शंख चक्रः ओम भगवते श्री भुवन भास्कराय नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। पहला गणपति पूजन फूलनी पाकड़ी છે ચોખા બરોબર ચલો એક જ ફૂલની પાકડી જે છે ને આ જો ને ગુરુજી તમારે ગણપતિ છે ને ગણપતિ આ પ્લેટમાં રાખો આ પ્લેટમાં રાખો ફૂલની ઉપર ગણપતિ તો મિડલમાં કરી દો મિડલ आ जाओ आपको कैसी है तबीयत? ठीक माचिस वगैरह कुछ चाहिए? नहीं सब फूल पाकड़ी चोखा हाथ में पकड़ी रखो. Now we are going to invoke the Lord Ganesha. Lord Ganpati. Next shloka is very common. If you know, you can join us. Om Vighaneshwaraya Varadaya Surapriyaya Lambodaraya Sakalaya Jagadhitaya Nagananaya Srutijagnaviभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते. ओम सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहित श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः. ध्यायामि ध्यान पुष्पम समर्पयामि. आवाहयामि आवाहनम समर्पयामि. પછી એક ફૂલની પાકડી. ઓમ ध्यान आवाहन પછી आसन. ओम पूर्व एवेदगुं सर्वं जलभूतं च भाव्यम् उतामृतत्वसि येषानः जगन्नेनातिरोहति. ओम सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहित श्री महागणपतये नमः. इदं पुष्पासनं समर्पयामि. પછી કોપરની સ્પૂન છે ને આચમણીથી ચાર દફે પાણી 4 ટાઈમ. ओम देव सत्वा सवितो प्रश्वश्नोर्बाहुभ्यां पुरुषो हस्ताभ्याम् ओम एतानि पाद्यार्घाचमणीय स्नानीय पूर्णाचमणीयानि. ओम भगवते श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः. इदं पादयोः पाद्यं समर्पयामि. हस्तयोरर्घ्यं पर्घ्यं समर्पयामि. मुखे आचमनीमाचमनीं समर्पयामि. सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि. પછી પંચામૃત. ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः. सरस्वती तु पंचधा सो देशे अभवत् सरिता. पंचामृतम 5 टाइम. थोड़ा लिटिल 5 टाइम अर्पण करो. ओम पंचामृतम मया नीतं पयोदधे घृतं मधु शर्करया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्. इदं पंचामृत स्नानीयं भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ समेत सहित श्री महागणपतये नमः. पंचामृत स्नानं समर्पयामि. पयोदधे घृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्. इदं पंचामृत स्नानीयं भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहित श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः. पंचामृत स्नानं समर्पयामि. પછી શુદ્ધ જળ મીન્સ પાણી વોટર ક્લીન વોટર. ઓમ ગંગે ચ જમુને ચૈવ ગોદાવરી સરસ્વતી નર્મદે સિંધુ કાવેરી સ્નાનાर्थं प्रतिगृह्यताम्. इदं शुद्धोदक स्नानीयं भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहित श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः. शुद्धोदक स्नानीयं समर्पयामि.
एक ज फूलनी पाकड़ी लई लो, आमा थोड़ो चंदन चोखा लईने गणपति अर्पण करी। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। Now next is the step of the puja is the abhishek to Lord Ganesh. Next shloka is also very common. This is called Shri Sankatanashan Ganesha Stotra. If anyone you know, you can join us. Pani chana. And during the chanting, slowly just offer the water to Lord Ganesh. Shuru kariye? Om Shri Naraduvach pranamya sirasa devam gauri putram vinayakam bhaktavaham asmare nityam ayushkamaasa siddhai pratamam bhaktundam cha ekadantam dutiyakam tritiyam krishnapindakam gajavastram cha pushakam लंबोदरम पंचम च सत्सं विकटदेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं प्रकाशमं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं च पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं खड्गेरमासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा च समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाथं श्रीगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। Use a little bit more water and clean the Lord Ganesh. Om Gange cha Jamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jale Asmin Sannidhyam Kuru. Om Bhurvasva Bhagavate Shri Siddhi Buddhi Subhalava Sahita Shri Mahaganapataye Namaha Suddhoda Kashnaniyam Samara. So, पानी જોઈએ પ્લીઝ કરી રાખો. એક જ ફૂલની પાકડી ઉપર ફૂલ બંધ બરોબર. નારા છડી જો થાળીમાં છે ને નારા છડી એક જ अर्पण करो. ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देव सदा सविता पुनाद वसोः पवित्रेण सतधारेण सुक्वा कामधुक्षः इदं वस्त्रोपवस्त्रं भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणपतये नमः. वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि. थोड़ो पानी जे છે ને કંકુમાં થોડો મૂકી દો પછી ચાંગલા કરો. પાણી જોઈએ પાણી લઈ લો. કંકુ સુકાઈ ગયું છે ને. Second one red color is the કંકુ ભીનું છે ને લાઈ થઈ ગયું છે જરા ભીનું કરો તો ચાલો. ओम कुंकुमं कामना देव्यं कामनी कामदं शुभं कुंकुमेनार्चितो देव अतः शांतिं प्रयच्छते. ओम अक्षताश्च करो चांगला करो कंकु चोखा. ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुम चोखा. अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदितो भक्त्या गृहाण गणनायक पशि फूल. ओम माल्यादीनि सुगंधेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्. एतानि पुष्पाणि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणपतये नमः.
एतानि नानाविध पुष्पानि समर्पयामि પછી થાળીમાં જો બધા કલરની જે પાવડર છે ને થોડો થોડો પાવડર લઈને અબીર ગુલાલ હળદર સિંદૂર બધું અર્પણ ઓ અબીર ગુલાલ પાવડર પાવડર ओम श्वेत चूर्णम रक्त चूर्णम हरिद्राम कुमकुमम तथा सिंदूरेणार्चितो देव अतः शांतिं प्रयच्छ मे एतानि नाना परिमल सौभाग्य चूर्णम भगवते श्री महागणपतये नमः सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि પછી બે ચમચી પાણી આપલે ओम धूपम आघ्रापयामि दीपकम संदर्शयामि धूपम आघ्रापयामि प्लेटफॉर्म हाँ धूपम आघ्रापयामि दीपकम संदर्शयामि धूप दीपांते शुद्ध आचमनीयम समर्पयामि પછી એક જ ફ્રૂટ હાથમાં લઈ ફ્રૂટ ફ્રૂટ હાથમાં લઈ ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषोद्यवहौ समवर्तताभ्यां भूमड्यसः श्रोता तथा लोकाम् अकल्पयन् ओम भूर्भुवस्वः इदं काश्मीर फल नैवेद्यं भगवते श्री पलसु के भाई काश्मीर फल नैवेद्यं इदं काश्मीर फल नैवेद्यं भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सुराग सहिताय श्री महागणपतये नमः इदं काश्मीर फल नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा पांच दफे पानी प्लेट गणपति की प्लेट में नहीं ओम मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करद्वाराभ्ये गन्धं समर्पयामि अगेन ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा अगेन 5 टाइम वन मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करद्वाराभ्ये गन्धं समर्पयामि थोड़ा चोखा लઈને अर्पण કરી ओम इदं द्रव्य दक्षिणार्थे अक्षतान समर्पयामि પછી હાથ જોડીને ક્લોકવાઇઝ ત્રણ વખત જે છે ને જસ્ટ મેક સર્કલ ओम जानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे इदं मंत्र प्रदक्षिणां भगवते श्री महागणपतये नमः मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि પછી હાથમાં ફૂલ ચોખા લઈ ओम लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उज्ज्वलदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि लंबोदरं नमस्तोभ्यं सततमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम भगवते श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणपतये नमः गणेश अंबिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि एक चमची पानी प्लेटમાં ओम अनेन कृतेन पूजनेन भगवान श्री गणेश अंबिकयोः देवता प्रियतां नमः नमः बोल गजानन गणपति महाराज की जय गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति ની પ્લેટ જે છે ને હાથમાં લઈ લો માથેથી લગાવો you just lift a little bit more reva holy 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 next Saturday holy लाओ गणपति यहाँ चलो गणपति बाप्पा मोरया ना ना कहीं જોઈએ ચોખા અહીંયા છે એક જ કટોરી આવી છે ચોખા આ ગુલાબ પડી ઓ ગુલાબ બરોબર
चोखा હવે ગણેશ પૂજા પછી કલશ પૂજન भाई से नाम से दिनेश भाई ना ब्रदर दिलीप भाई कम 6:30 નીચે ગયા ને भावेश भाई ભાવેશ भावेश भाई ओके જય શ્રી કૃષ્ણ तो फूड आएगी लगे से નીચે જવું પડે हमने कहूँ आगे की उसमें बनवा है फूड आई गई कोई छे दिनेश भावेश भाई छे नीचे ना ये तो गया ના ઘરે નહીં ઘરે નીચે જતા બની હવે એ બહાર ગયા पर फूड मुकी गया छे ने हाँ फूड बनवा લો સો जीबी बॉय है વાહ कल साजे ले लो रंगा फलम भागी रंगा फलम तुम्हारा कल हाँ रेवा हाँ कोकोनट जे है ना आ जो कलश कोकोनट थोड़ी વાર બહાર મૂકી દો નારિયેળ પછી કે ત્યારે પાછી સ્થાપન કરવાનું यो नागेश्वर ना पान પાંદડીમાં દો અને નારિયેળ પાડી દો એ કળશની પૂજા થઈ જાય પછી નારિયેળ कलश में हाथ लग હાથ લાગે ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वसितो ब्रह्मा मध्ये मात्रिणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशस्य तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ते पुष्टे करे तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरित क्षयकारकाः चार डब्बे पानी लईने कलश के अंदर फूंको ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेत्या च गौतमी भागीरथी च विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिताः एक फूलनी पाखड़ी चंदन चोखा लईने कलश के अंदर फूंकी ओम सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नागरबिल पान में हाथ लगा ओम अंबे अंबिकं बालके नमानयति कषण ससत सुखा सुभद्रिकां कांपिल्यवासनीं પછી આ શ્રીફળ લઈ શ્રીફળ ઉપર પધરા ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी शपथन्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्नो व्यातम् इखन् निखानामुम् इखान सर्वलोकम् ईशान चल थोड़ो चोखा श्रीफल ऊपर ओम मनोज उदरजपतामाजिसे बृहस्पतिर्जगमिमन्तनुत्वरिष्टम् जगगुंसं दहातु विश्वे देवास हिमादेन्तावों प्रतिष्ठा ओम भगवते श्री वरुणाराध्य देवताभ्यो नमः इदम् आवाहनं समर्पयामि ध्यायन्नं समर्पयामि आवाहयामि પછી ત્રણ દફે પાણી થોડું પાણી કલશાની પર ओम एतानि पाद्यार्घाचमनि अष्टानि प्रणाचमणियानि ओम भगवते श्री कलशाधिष्ठित वरुणाराध्य वाहित देवताभ्यो नमः कलशाजी ऊपर चूर्णी पर अर्पण कर दे ओम ओम जुवासवासाः परिवीत आगासौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवयोन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः इदं वस्त्रोपवस्त्रं भगवते श्री कलशाधिष्ठित वरुणाराध्य वाहित देवताभ्यो नमः પછી કંકુ છે ને કંકુથી ચારો દફે એક એક ડોટ એક એક કંકુમાં થોડો પાણી કરી દો ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं संपूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं संपूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं संपूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं संपूजयामि मध्ये अपांपतये वर्णाय नमः अपांपतये वर्णं संपूजयामि अपांपतये वर्णं संपूजयामि
પછી હાથમાં થોડો ફ્લાવર ચોખા લઈ ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जटासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपानि नमस्तुभ्यं पद्मने जीवनाय जावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री कलशाधिष्ठित वरुणाराध्याय देवताभ्यो नमः। हाथ जोड़ी लो। ओम भो ब्राह्मणाः मम सकल कुटुंबस्य सकल परिवार सहितस्य गृहे करिष्यमाणाय श्री सत्यनारायण पूजा कर्मण्यन्तर्गतेन आशीर्वचनम् अपेक्षमाणाय पुण्यं कल्याणं रिद्धिं स्वस्ति श्रीः इति भवन्तु प्रभवन्तु नः। ओम अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् ओम अस्तु कल्याणम् ओम अस्तु कल्याणम् ओम अस्तु कल्याणम् ओम कर्मरिद्धतां कर्मरिद्धतां कर्मरिद्धताम् ओम आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति ओम अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः। बरोबर चलो अब रेवा कलश answer जी से रेवा it is more risky because water is there ओम तदेव लग्नं सुदितं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी पते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां ऊपर पकड़ी रखते ऊपर ना हो आइए माथा ऊपर माथा कमर के माथा ने लगाए माथे लगाओ माथे लगाओ ला नारियल तदेव लग्नं सुदितं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी पते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। एक चमचे पाणी आणि सत्यने पूजनेन भगवान श्री कलशाधिष्ठित वरुणाराध्याय देवता प्रियतां नमः नमः। હવે next is the નવગ્રહ પૂજા। તો આ પ્લેટ જે છે ને બીજા પ્લેટ ક્લીન કરી લો મૂકી દો પાણી પાણી હોય તો આમાં મૂકી દો આ તમારી પ્લેટ खाली चल बड़ी मरा बीच आज में फूल चोखा पकड़ी राखो फूल की पाकड़ी चोखा। नेक्स्ट श्लोक is also very common। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यान पुष्पं समर्पयामि। थोड़ा चोखा लेने सुपारी ऊपर यंत्र ऊपर अर्पण करी दो। ओम मनोज्योतिर्युक्तामा चोखा ओम मनोज्योतिर्युक्तामाजिस्य बृहस्पतिर्जगमिमन्तनुत्वर्ष्टम्म जगगुं शृण्डाद विश्वे देवास हेमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। आवाहनं समर्पयामि। પછી ચાર દફે પાણી। ओम देवसत्वा सवितो प्रश्वष्णोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां ओम एतानि पाद्यार्घाचमनिष्ठानि पूर्णाचमनियानि ओम भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह यंत्र ऊपर ओम एतानि पाद्यार्घाचमनिष्ठानि पूर्णाचमनियानि ओम भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम इदं पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यम् अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीम् समर्पयामि सर्वांगे स्वस्नानि जलं समर्पयामि। પછી પંચામૃતિ ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः सरस्वती च पंचधा सुहृदेशे अवसरिता पंचामृतं मया नीतं पयोदधे घृतं मधु शर्कराया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इदं पंचामृत स्नानं भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम पयोदधे घृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इदं पंचामृत स्नानं भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। પછી ક્લીન વોટર
water, clean, yeah, use the water, clean it, yeah, clean it, wipe it. ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिबाल तदसुनाः सेतः सेताक्षोरणस्ते रुद्राय पशुपतये करणा जामावलिप्ता रुद्रानभो रूपाः पार्जन्याः ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ત્યાં છે આ પ્લેટમાં શું જોઈએ ગુરુજી? કાગળ લાજો તમારા રાઈટ લેફ્ટ હેન્ડમાં રેડ કલર વાली पेपर ट्रैवल यूज करना हमारे चल एक नाराज ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवसत्वा सविता पुनात वसोः पवित्रेण सतधारेण सुक्वा कामधुक्षः इदम वस्त्रं भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। પછી ચોખા કંકુ બધું જે પાવડર છે ફ્લાવર છે બધું યુઝ કરો। નવગ્રહ સૂક્ત કોઈના આતા હોય તો બોલો। ओम जपात सम संकाशम काशपेयम महादुतिम तमोरिम सर्पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम दधि संगतुषाराभम क्षीरोदार नवसंभवम नमामि ससरम सोमं संभोरं कुटभूषं धरणी गर्भ संभोधं विद्युतकान्ति समप्रभं कुमारं सत्यस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहं प्रियं कुकलिका श्यामं रूपेण आत्ममुदं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हेमकुन्दं मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विमर्दनं सिंहकागर्भ सम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्प संकासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं। ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। इदं कुंकुमचूर्णं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि नानाविध परिमल पत्र पुष्पक्षतां च समर्पयामि। अगेन फ्लावर एंड चोखा राइस। ओम सूर्यः सौर्यमखेन्दुरोच्च पदवीं सनमङ्गलं मङ्गलः सदबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहाः। ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बोल नवग्रह भगवान की जय। जी बिल्कुल। नमस्ते, कैसे हैं? अब नेक्स्ट is our the main puja, Lord Shri Satyanarayana. Take the flower petal and the rice. I am the one. Okay. In a neighborhood, she cannot reach her. She's a virgin. Yeah. Next shloka is also very common. Shantakaram bhujaka shayanam. It is now we are going to do dhyan of Lord Shri Satyanarayana Dev. Om Shantakaram bhujaka shayanam padmanabham suresham Vishwadharam gaganasharsam Meghavarnam subhangam Lakshmikantam kamalayanam Yogivirdhyanagamyam Vande Vishnum Bhavavayaram Sarvalokaikanaatham Om Narayanaaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnuh Prachodayat Om Bhagavate Shri Satyadevaya Namaha
रेवा दो गुरु खरा मत कर। हाँ मूर्ति ऊपर मुको। ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः। इदं ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। Shaligram, right? Yeah. This is Shaligram stone. So instead of Lord Vishnu, he was cursed by the Brinda. yeah, this is And then he became the form of Shaligram. Shaligram. Sure. Now use little rice. Dhyan, pachi आवाहन. ओम मनोज्योतिर्जुखतामार्यस्य बृहस्पतिर्जगमिमन्तानुत्वरिष्टं जगितुं सममं दधातु विश्वे देवा स इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं आवाहनं समर्पयामि पानी लाओ My water is there. Okay, chair. Get it. आवाहनं आचमनीयम एक चमची पानी मंत्र પછી એના પગ ઉપર મંત્ર પછી પેલા મંત્ર બોલું પછી પગ ઓ નહીં આવાહન થઈ ગઈ ને આવાહન પછી આસન એક જ ફૂલની પાકડી લઈ સોરી ओम पुरुषय वेदगुं सर्वं जदभूतं च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानः जगन्नेनातिरोहति ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं पुष्पासनं समर्पयामि પછી એક ચમચી પાણી it is called पाद्यम ओम एतावानस्य महिमातो जायाञ्च पुरुषः आरोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं पादयोः पाद्यं समर्पयामि પછી પાણી લો આ પાણીમાં થોડું ચંદન થોડું ચોખા એક જ ફૂલ it is called अर्घ्य અને મંત્ર પછી એના હાથ ઉપર રાખજો that is called अर्घ्य ओम Flower. ओम मातृपादोद्गौदैत्पुरुषः पादोसेहा भवत् पुनः ततो विकुं विक्रामत शासनानसने अभि ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं हस्तयोर अर्घ्यं समर्पयामि again take one more time water this time offer in his mouth ओम ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो वत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं मुखे आचमनीयं समर्पयामि again one time water this time offer on his head ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवाल तदसुनाः सेतः सेताक्षो वरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामालिकारौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं शुद्धोदकस्नानीयं समर्पयामि then you will panchamrit we have lot of panchamrit is generously ओम पंचनद्यः सरस्वतीमभिजन्ते सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे अभवत्सरिता पंचामृतं मया नीतं मयोदधिघृतं मधु शर्करया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम पयः दिव्यं पयो खरीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशः संतुमयम् ओम तदेक्राम्नौ अकारिकम् जिष्णोरससवारिणः सुरविनो मुखाकरद प्रणआयुगुं हितादिकत ओम घृतं मेमेक्ष घृतमसजो निरघृत श्रतो घृतमसधाम जमुना अनुकदवावहमादिस स्वाहा घृतं भृगवक्षि हव्यम् ओम मधु वातारतायते मधुक्षिरन्ति सिन्धवः माधुर्नः सन्तो गधे मधुनकं गोघसो मधुमतपार्थिवगुं रजः मधुर्यौरस्तुनः पिता मधुमाम्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः ओम इष्टसारसमुद्भूता शर्करापुष्टिकारिका मलापहारिका विद्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं पंचामृत स्नानीयं समर्पयामि then one time water
पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि शुद्धाचमनीयान्ते गन्धोदकम् ओम गन्धद्वारां दुराधरसां नेत्यपुष्टां करेखनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहव्ये श्रियम् ओम भूर्भुवस्सुः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं गन्धोदक स्नानीयं समर्पयामि गन्धोदक स्नानं समर्पयामि गन्धोदक स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक यूज द वाटर ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि પછી થોડો હળદર ઓમ અહિરિવ થોડો પાણીમાં થોડો ચમચીમાં પાણીમાં હળદર થોડો લઈ લો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઉર્તન ઉદ્વર્તન और पीठी बरोबर ओम अगुं सुनाते अगुं सो प्रेषतां परुहा परुहो गन्धस्ते सोनमदाय रसो अच्युतः मलयाचल संभूत चंदनेन विनिसृतम् उद्वर्तनं मया देवस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् इदम् उद्वर्तनस्नानीयं भगवते श्री सत्यदेवाय नमः उद्वर्तनस्नानीयं समर्पयामि उद्वर्तनस्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानम् शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयान्ते फूल चंदन चोखा फूल फ्लावर चंदन चोखा सकलोपचारार्थे भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि again one time water ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम इदं शुद्धोदक स्नानीयं भगवते श्री सत्यदेवाय नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि again flower चंदन सैंडल पाउडर and rice ओम भूर्भुवस्सुः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि पानी भरी शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नेक्स्ट इज द अभिषेक Okay. नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट द पुरुष सूक्त it has the only 16 hymns 16 mantra right and their explanation it is in the Srimad Bhagavad Gita chapter 11 right that is called Vishwarupa Darshan so now I am going to recite the mantra and during this chanting slowly just offer the water to Lord Sri Satyanarayana Dev shuru kariye Yeah. हरि ओम ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वतस्वाद्यतताङ्गुलं पुरुषै वेदगुं सर्वं जगभूतं जगभार्यं भूतामृतपुरसीतानः जगन्नेनातिरोहति एतावान् महिमातु च पुरुषः आलोक्यत्वा भूतानि कृपादस्यामृतं दिवि कृपादुर्गौरै पुरुषः आलोतेया भवतुनः तपोविकुम्भिकामताशासनान् अभि ततोऽभ्यराजयायतविराजो अभिपूरुषः सजातो अत्यरितनवशाधो निमभूपुरः तथाजया सर्वभूतः संभृतं मृगवाद्यं पशुसाञ्चकेताययानारण्या ग्राम्यासुरे तथाजया सर्वभूतरिषः सामानिकगिरे छन्दागुंसगिरे तस्मादजायः तस्मादस्वा अजायन्त ये चोभयादतः रामो हटगिरे तस्माज्जाता अजावयः संजयं वरहिभिः प्रौषं पुरुषं जातमृतः ते
येन देवा अयजन्त साध्यारकयतरे चतुर्भं जगदुः अभिधारकमयन्न मुखं किमस्यासि किं बाहु किमूरुपादावुचेते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासे बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तारचन्द्रवैश्यः सव्याजुन्दोद्रो अजायत चन्द्रमामरसूर्यासकटोः सूर्यो अजायत प्रोतार्वायुषप्राणसमुखातनिरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रेष्ठो द्यौः समवतः पद्भ्यां भूमिकृतः श्रोता तथा लोकां वदपयन्न यत्पुरुषेण अधिकारेव यजमतन्वद वसन्तोऽस्यासीदाय ग्रीष्मैमः सर्गभिः सकाशासन् परिधायकैः सप्तसमिधः कृताः देवाजयज्ञं तन्वान अवदनं पुरुषं पशुं दग्नेन जयमयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सदन्तरत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्यः सम्भृतः पृथिवीरमाजविभकर्मणः समवतताग्रे सततसाविदरूपमेति तन्मततदेव स्वमायानमग्रे वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परसादः समेव विश्वास मृतुवेति नान्यः पन्था विजितेयनाय प्रजापतश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य जोनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् प्रभुराणि विश्वा यो देवेभ्य आदमतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जाव नमो मृषाय ब्रह्मणे मृषं ब्राह्मण जनयन्तो देवा सरब्रह्मन्न यस्वैव ब्राह्मणो तस्य विद्या असन्वते श्रेष्ठते लक्ष्मीशौर्यावहोरात्रे मात्रेण सुतानि रूपमतिरोव्याकम् इकन्निकानामुं महिमान सर्वलोकम् ईशान ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम इदं अमृतोदकाभिषेकमर्पणमस्तु then take one flower petal from the puja from the Lord Satyanarayana. It is called Ramanya. Smell it little bit, smell it little bit, touch it on your eyelid, touch it on your forehead, then make one circle around your head and put it back. Put it back and then clean your hands. Clean your hands. Clean your hands in the other place. Clean your hands. Clean your hands. Come, wash your hands. Then use the clean water. Wash your hands. Clean him, wipe him. Ganga, Sindhu, Saraswati, cha Jamuna, Godavari, Narmada, Kaveri, Sarayu, Mahendra, Tanaya, Manvade, Veka, Prave, Pravate, Mahasurnadi, Khyata, Gaya, Gandaki, Purna Jalena, Samudra, Sahita, Snanam Sada, Mangalam. Om Bhurvasvaha Bhagavate Shri Satyadevaya Namaha Shuddhodakashnaniyam Samarapayami. जमुना जलमा केसर घोरी ऐसे रख के रखा ऐसे रखो अच्छा ना बनाना ऐसे गिफ्ट रखो हाँ साथ में ने हाँ से हाँ जो गुरुजी रुको एक once I give you a special आसन ખાસ કેળના પાંદડા આવે છે I know it's a very rare thing to happen. good चल अब नारा छड़ी ले पानी છે પાણી આચું છે પાતળું આ વાટકી લા
पाणी बोलो कोई। हल्के हाथे अंगों पोछी लाड लड़ाऊं साथ जमुना जल केसर घोरी स्नान कराऊं अंगो छोड़ी लाड लड़ाऊं श्यामणा अंगो लूची आपू तुझने बिडू पीतांबर प्यार तेल सुगंधी नाकी आपू वाकड़िया तुझ पालमा जमुना जलमा केसर घोरी स्नान कराऊं श्यामणा वगमा जाजर रुम झुम वागे करमा कंकण कालमा कंठे मारा बाले तिलरु शोभे मारा वालमा यमुना जलमा केसर घोरी स्नान कराऊं श्यामणा दूध प्रसाद भी दे दो दूध कटोरी भरी ने आपू पियो ने मारा श्यामणा भक्त वत्सल निरखी शोभा चारा को शरणे श्यामणा कटोरी आ गई आई ना दूध कटोरी आई ना सब एक नारा छड़ी लीजिए अर्पण करो। ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाय पुण्यं समर्पयामि ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः ततः वस्त्रोपवस्त्रम् ओम ज्वाश्वासाः परिवीत आगासोत्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः सुवयुन्दयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ओम भृगस्व भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रान्ते again take another nara chodi ओम जगनोपवेतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्जसाजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शोभ्रं जगनोपवेतं बलमस्तु तेजः इमे जगनोपवीते बृहस्पति देवते भगवते श्री सत्यदेवाय नमः जगनोपवीतं समर्पयामि जगनोपवीतान्ते शुद्ध आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयं जलं आचमनीयं जलं समर्पयामि पचि चंदन ओम श्रीखंड चंदनं देव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् इदं श्रीखंडचंद्रं भगवते श्री सत्यदेवाय नमः श्रीखंडचंद्रं समर्पयामि पचि चोखा ओम छन्नमी मदन्तः विप्रिया अधोगता अस्तोक सौभानवो विभ्राण विष्ठयामति योजामिन्द्रुते हरिः इदमक्षतं भगवते श्री सत्यदेवाय नमः अक्षतं समर्पयामि પછી હાથમાં અંજલિ આજે છે ને શું કહેવાય આ જોડ લઈને ओम सेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद एतानि नानाविध पुष्पाणि भगवते श्री सत्यदेवाय नमः पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते मधु पाउडर अबीर गुलाल हरदर ओम अहिरेव भोगैः परयेति बाहुञ्जाया हेतिं परिवारमाणः सगनो विश्वावयोनन विद्वनपुमनपुनकुलं समपरिवार विश्वतः अबीरं च गुलालं च चोभाचन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देव
अतः शांतिं प्रयच्छामि एतानि नानाविध परिमल सौभाग्य द्रव्यं भगवते श्री सत्यदेवाय नमः नाना परिमल सौभाग्य चूर्णं समर्पयामि પછી પ્લેટ લઈ ગુરુજી થોડો બી કેરફુલ હા પ્લેટ હાથમાં લઈ ओम मनोजोद्रजुगदामाजिषे बृहस्पतिर्गमिमन्तनोत्वर्षकं जगगुं संधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापय પછી 2 ચમચી પાણી આ પ્લેટ મૂકો one time for dhupam one time for deepam ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तादृश जनवैश्यः पद्यागुं शूद्रो अजायत ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं धूपार्थे आपः समर्पयामि ओम साज्यं च वरति संयुक्तं वहनिना योजितं मया दीपकं गृहाण मे देव त्रैलोक्यं तिमिरापहम् ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं दीपार्थे आपः समर्पयामि धूप दीपांते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि પછી નૈવેદ્યમ બરોબર ફ્રૂટ હાથમાં લઈ આ તમારી છે ને बने फ्रूट हाथ में ले ओम नाभ्या आसेदंतरिक्षगुं श्रेष्मौद्योहं समवततावभ्यां भूमिर्विदः श्रोता तथा लोकां प्रकल्पयन् ओम त्वदीयमस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितं विधानः सम्भो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम इदं नैवेद्यं भगवते श्री सत्यदेवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि उसको क्या बोलते हैं वो कश्मीर फल नहीं है ना you came little नाशपाती late क्यों है नाशपाती the apple for apple he said it's a Kashmir फल when he announced it so ऑरेंज ना आज है जम्बू फल जम्बू आज है रंभा फल आज मंदिर का बुलावा था ईशन के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए नहीं तो मेरे को तो होना ही नहीं था यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट मंडे नाइट ये वेदर खराब थी ना तो हमारे लिए देख मैंने बोली देख हमारे लिए रखी हाँ कैंसिल हो गया तभी तो मैं यहाँ पहुंची नहीं तो कहाँ आती मैं यहाँ I think one program it is on Friday evening 6 o'clock Friday also there is oak ceremony yes I'll be there chief right चीफ मेरा फ्रेंड है ना yeah I What? also आप आएंगे got a card so temple and both at the same time I can't miss it. आप फ्राइडे को नहीं आओगे फिर Some Somebody supposed what to be time here, is it 6 o'clock 6 Our o'clock event is at do you want me to look for a you want to do you want volunteer आपको volunteer चाहिए फ्राइडे के yeah लिए I need ठीक है if I have backup then So it it will should be nice because rabbi भी होगा हाँ तो, yeah all the सारे pastors होंगे so I think you should be there I'll find your volunteer switch it can you switch it no I have switching नहीं होता सर morning I'm ठीक है। somewhere अच्छा okay चल I'll get your Thank you. volunteer नैवेद्य થઈ ગઈ ને પછી હા ચલો જમ ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ગીતામાં છે ને પંચપ્રાણ so we પંચપ્રાણ મીન્સ આપણા દેહમાં પ્રાણ છે ને પ્રાણ ડોક્ટર સાહેબ અહીંયા છે પ્રાણ છે આપણા શરીરમાં right the 5 kind of the pran and this pran our pran it is depends upon anna food no food means no pran right no water means no pran but bhagwan ni je deh hoy na
એમાં આપણા તરીકે એ હારમાંસ વાળા હોય રાઈટ ભગવાનની દેહ જે હોય ને એ દિવ્ય રૂપ और ભગવાનની જે છે ને એ બળતા હોય ને અવતાર means those who come on their wish, those who go on their wish, that is called avatar. That is called avatar. So we offer in the prasad 5 times because we have the pancha prana. Gita ma chai na prana. Again 5 times water. ओम मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि, उत्तरापोषणं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, करदुरार्धे गंधं समर्पयामि. Again 5 times. ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा. Again 5 times. ओम इदं पूर्वपोषणं जलं समर्पयामि, मध्ये आचमनीयं समर्पयामि, उत्तरापोषणं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, करोद्गुणार्थे गन्धं समर्पयामि. थोड़ा चोखा. ओम हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतसजातः पतरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम. इदं द्रवदक्षिणां भगवते श्री सत्यदेवाय नमः. इदं द्रवदक्षिणां समर्पयामि. द्रवदक्षिणार्थे अक्षतान् समर्पयामि. तथा प्रदक्षिणाम् ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिनः देखाग्ं सहस्रयोजने वधन्वानि तम्मसि. इदं मंत्र प्रदक्षिणां भगवते श्री सत्यदेवाय नमः. मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि. Then namaskaram means of flower, fully papri, chokha. ओम शशंख चक्रं सकिरीट कुंडलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थल शोभित कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्. ओम श्री सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया च ततो विश्वं जेन तस्मै नमो नमः. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ओम भगवते श्री सत्यदेवाय नमः. प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि. बोल श्री सत्यदेव भगवान की जय. एकाचमनी जप अनेन कृतेन पूजनेन भगवान श्री सत्यनारायण देवता प्रियतां नमः नमः. बोल श्री सत्यदेव भगवान की जय. लेकिन શું છે પગને તમારે જોઈએ છે મોટી ચેર શ્યોર શેરજી તમારું પગ સેજી કે સિફર ક્રિયા નહીં સેજી કા તકલીફ નહીં है. So next step is the story कथा. हाथમાં એક ફૂલની પાપડી લઈ લો. If anybody those who want to read you can read it. The story it is in the English. So You can read it, it's better. Yeah, we can also read it. I read all of it. Okay, we can take turns, no problem. लीजिए विनीताजी. Here and then here. It's one chapter. Chapter 1. ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत. श्रीव्यासवाच एकदा प्रथमोऽध्यायः. श्रीव्यासवाच एकदा निमिषारण्ये ऋषयः सुमतादयः प्रपुच्छन्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषयः ऊचुः. व्रतेन तत्सा किं वा प्राप्स्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने. सूतुवाच नारदेनैव संपृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरक्षय तथैवाह तस्ऋद्धं समाहिताः. Story of Lord Shri Satyanarayana Bhagavan, chapter 1. Once upon a time, while traveling the three worlds, Yogiraj Narad Muni reached Mrityuloka, planet Earth. He saw the human beings suffering immensely. He visited the abode of Lord Vishnu, who alone can relieve the mankind from the sufferings. There he met the Almighty Lord Vishnu with 4 arms, having Shankara, Chakra, Gada, and Padma, wearing Tulsi Mala in his neck. He started to pray and requested, "Oh Lord, you are the supreme power. Nothing can touch you. Not even wind or mind can get you. Your power is limitless. You know everything. You help your devotees to overcome their sufferings and sorrows." Hearing all the pleadings of Sadhu Narad Muni, the Almighty Supreme Lord Vishnu, knowing everything, asked Narad Muni, "Oh Narad,
Why have you come to me and what do you want from me? Tell me, I want to hear the same from you. Yogi Raj Narad Muni replied, "O Lord, I just went to Mrityulok, where I saw all kinds of human beings suffering in sorrow due to their previous karma. O Lord, the Almighty, is there no way that their suffering becomes less, or is it possible that they get complete moksha from their sufferings? If so, please let us know." The Lord at once replied, "O Narad, you have asked a very good question for the benefit of all humankind. To free mankind from all sufferings and to ultimately reach heaven, there is one writ, and today I will tell you all about it. Anyone who does Shri Satyanarayana's writ and Puja in the right way will get all the pleasures on earth and will reach his goal." Yogi Raj Narad Muni then asked, "O Lord, has anyone ever kept this fast before? This writ is done on which day and how exactly is it done? Please do let us know all the details." Whosoever does Bhagwan Shri Satyanarayan Ji's Katha with Brahman and with his family with full rights will be relieved of his sufferings and sorrows, will be bestowed with increase in wealth and wisdom, will be blessed with children, get overall victory and increased devotion. For this prayer, one requires ripe bananas, ghee, milk, and churi, made with wheat, flour, ghee, and sugar. After the prayers, all present must have the prasad and take their meals together, and then sing praise and chant mantras of Lord Satyanarayan. By doing this, their wishes will be fulfilled. This spring in Kalyug gives the boon very quickly. This chapter of Shri Satyanarayan Swami is over. All Now, chapter 2. Oh, you want me to read? Yeah, if you want, you can read. Yeah. Or if anyone from the guest. Yeah, you can also come, whoever wants to read. You want to come? 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 Come. How? What is like that? Share out. સાંભળું છે વાંચ્યું છે આવી જાવ. Anybody wants to read? Please come. Okay. So, now chapter 2. The Lord said, You're allowed to go. The Lord said, "O Naraji, now I will tell you about the first person who did this fast. In a place named Sundar Kashipur, there used to live a very innocent Brahmin. In hunger and thirst, he used to roam around for his daily bread. When the loving Lord saw the Brahmin in sorrow and begging daily, he took disguise of an old Brahmin and asked him, 'Oh dear, why are you so sad? Please tell me all about your difficulties. Is there any way I could help you out?' The Brahmin told the Lord, 'I am a poor Brahmin, and I roam around daily for bread, and do you know if there is any way to come out of all this sorrow?' The old Brahmin, the Lord, said, 'Lord Satyanarayan grants all the wishes of all the people, dear Brahmin. That is why if you pray to him and keep his fast, you will overcome all your sorrows and get moksha.' After telling him all the details of the prayer and the fast, the old Brahmin, the Lord, disappeared. The Brahmin could not sleep that night. He kept thinking of the fast and the prayer which the Lord had asked him to do. In the morning, he woke up with the thought that anyhow he must do the prayer and went out for rickshaw. On that day, the Brahmin got a lot of money, from which he bought all the necessary things for the prayer, called his family, and did Lord Satyanarayan's prayer. By doing so, the Brahmin overcome all his sorrows and became rich. From that time onwards, he used to do the prayers every month without fail. In this way, whoever does Lord Satyanarayan's prayer will get moksha. Anyone on earth who does this prayer will be relieved from all sorrows.
When Narad Muni noticed that the people on earth were eager to know about the other people who kept this fast, he narrated another story. The same Brahmin, now a rich person, used to do prayer every month without fail with his family. Once he was doing his prayer, a woodcutter passed from there. After keeping the bundle of wood outside the Brahmin's house, he went in for some water. The thirsty woodcutter saw the Brahmin doing his prayers. He bowed down to the Brahmin and asked him, "Oh, Brahmin, what are you doing? Please tell me about it." The Brahmin replied, "To grant all the wishes of human beings. This fast and prayer is useful. I have acquired all the wealth and fame by doing this prayer of Lord Satyanarayana." After hearing about the prayer and drinking the water, the woodcutter felt happy. He ate the prasad and left for his house. Thinking of Lord Satyanarayana in his mind, he said, "Whatever today I get from selling the wood, I will also do this prayer." So thinking, he kept the bundle of wood on his head and left home onwards. On the way home, he went roaming in Sundarnagar for selling the wood. On that day, he got 4 times more money than usual for the wood. Feeling happy, he went and brought all the things necessary for the prayers, right? Bananas, sugar, ghee, wheat flour, etc., and proceeded homewards. On reaching his house and after cleaning it, he called his family and did the prayer with due respect. The reward of the fast was that he became rich and had all the pleasures of life on this earth, and in the end of his life, he went to heaven. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami is over. It is in Saldapurane Revakande. Sri Satyanarayana Prakthayam Trityodhyayah. Om Sri Satyadeva Bhagavan Ki Jai. Adhyayah Sudhivaka. Punaragre Vrokshame Sudhamana Sutamaha. Puracha Ulkamukho Nama Nripasin Mahamati. Jitendriya Sadvadi Jalo Devalayam Pate. Dine Dine Dharam Dattvad Jana Sandobhe Sudhiha. Now, chapter 3. Sadhuraj Narad said, "O dear people, now let me tell you another story. There was a king named Ulkamukh. He was very wise. He would go daily to the temple and give donation to the Brahmin. His wife was spacious and beautiful lady, at the bank of Madhushala river. One day, when they were doing a Lord Shri Satyanarayana's prayer, a wealthy businessman was passing from there. He anchored his boat and went up to the king and asked him, "Okay, what are you doing with so much bhakti? I wish to know. Please tell me all about it." The king replied, "O merchant, I'm praying to the great, almighty, the boon giver Lord Sri Satyanarayana for a son." The merchant, on hearing this, requested the king to tell him all about the fast and the prayer, as he was childless too. The king told him the full detail of the prayer and fast. After hearing all the details, he decided in his mind to keep this fast. The merchant then left homeward. On reaching home, he told his wife Lilavati all about the fast and the prayer and said, "We will do this fast when we get a child." One day, with the grace of Lord Satyanarayana, his wife became pregnant. In 10 months' time, she gave birth to a beautiful daughter. They named her Kalavati. Days passed by. One day, Lilavati slowly and sweetly reminded her husband about the prayer and fast and requested him to fulfill his promise. The merchant told his wife that during the time of Kalavati's wedding, it would be easy to observe the same, for at the moment he was busy in the business, so saying he left for his business trip to various villages. Kalavati grew up to be a beautiful girl. When the merchant saw that his daughter was of marriageable age, he called a matchmaker and requested him to search an equal match for his daughter. Hearing the merchant's request, the matchmaker reached
Kanchannagar. From there, he brought the proposal of a young, handsome boy. The merchant liked the proposal, for the boy had all the good quality too. He then spoke to the boy's parents and affixed his daughter's marriage. The marriage was done with all the religious ceremony and ritual. Unfortunately, the merchant forgot all about his promise to the Lord Satyanarayana prayer and fast. The Lord got angry at the false promise made by the merchant. The merchant, after a few days, left for his business trip with his wife, with his son-in-law. They anchored their boat in a beautiful village named Ratanpur. In those days, the king Chandraketu used to rule the village. The Lord was angry with the merchant for the false promise made by him, and so he wanted to teach him a lesson. One day, the thieves robbed the wealth of the king, and they went and stayed where the merchant was staying. Seeing the guard following them, they left all the loot over there where the merchant was staying and hid themselves. When the guards reached the merchant's place, they saw all the king's wealth. Thinking them to be a robber, they handcuffed the merchant and his son-in-law and took them to the king and told him that they were responsible for the theft. The king, without questioning or listening to them, ordered to put them in a dark cell. Due to Lord Satyanarayana's Maya, nobody hurt them. Even their wealth was confiscated by the king. At the merchant's house, the thieves robbed all their wealth, and his wives and daughters had to beg for their daily bread. One day, begging for the food, Kalavati reached a Brahmin's house, where at that time Lord Satyanarayana Puja was going on. After listening to the prayer and taking the prasad, she left for home. By that time, it had become dark. Lilavati was worried. She asked her daughter Kalavati, "Why are you so late?" To which Kalavati told her mother, "Oh mother, today in a Brahmin's house, I heard a prayer. By doing this prayer and fast, all your wishes get fulfilled." On hearing this, Lilavati started doing all the preparation for the prayer of Lord Satyanarayana. She did the fast and the prayer and asked the Lord for forgiveness and prayed that her husband and her son-in-law should return home safely. Lord Satyanarayana was pleased with the prayer and the fast. One day, he told the king Chandraketu in his dream, "O king, you must release the merchant and his son-in-law from the dark cell. Tomorrow morning, give them their wealth and set them free. If you do not do so, your kingdom will be destroyed." In the morning, the king called the court people and told them about the dream. The court people, after hearing about the dream, came to the conclusion to free the merchant and his son-in-law. They asked the guard to bring the prisoner from the dark cell. King Chandraketu gave them good clothes, all their wealth, and plus some more, and set them free. The king told them that due to their wrongdoing, they had to undergo this suffering. But now there was nothing to fear, and they could go back home. They bowed down to the king and left homewards. This chapter of Lord Shri Satyanarayana Swami Jovariti Shri Skanda Purane Revashande Shri Satyanarayana Prathayam Tridiyodhyaya Gol Shri Satyanarayana Deva Ki Jai अथ चतुर्थोऽध्याय सुवाच यात्रां तो कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं जजौ कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधौ किमस्ति तव नौ स्थितम्. Chapter 4. Suji said, the merchant prayed first and then gave some wealth to the Brahmin before starting his journey homewards. When they went little further, Lord Satyanarayana ji wanted to test them. He took the disguise of an old man
and went up to the merchant and asked him, what is in your boat? Give me little from them. In his ego and pride, the merchant replied, "O old man, we have nothing in our boat except hay and leaves." On hearing such harsh word of the merchant, the Lord said, "Your words will be true." So saying, he went from there and sat on the bank of the river. When the Lord went away, the boat started to rise higher in the water. The merchant was surprised at this. When he went to check in the boat, he saw that his boat was filled with leaves and hay only. Seeing this, he fainted. When he came to his senses, he was very much worried. He said, "How could this happen?" At this, his son in law told him, "Do not cry over this. All has happened because you spoke harshly to the old man and lied to him. Still, nothing is lost. You could go back to him and ask him for forgiveness, and he will set you everything right." The merchant, after hearing the words of his son in law, went in search of the old man. He bowed down before him and with respect said, "O Lord, please forgive me for the false, harsh word that I have spoken to you." So saying, he bowed down with tears of sorrow in his eyes. When the Lord saw the merchant in his state of sorrowness and cried for forgiveness, he said, "Do not cry. Listen to me. O foolish person, due to your false promise, you have seen all this sorrow and suffering." On hearing the Lord said this, the merchant said, "O Lord, nobody can recognize your Maya, not even the gods or Brahmins know your ways and forms. I promise that I will pray to you." So saying, he asked for forgiveness. He said, "Please forgive me and let my boat be filled with wealth once again like before." On hearing the merchant's word, filled with bhakti, the Lord was happy and he fulfilled his wish. When the merchant mounted his boat and saw in full with wealth again, he thanked the Lord and said, "With Lord Satyanarayana's grace, my wish is fulfilled. When I reach home, I will do this prayer and fast." So saying, he left homewards. When the merchant saw this, his hometown Ratanpur is nearing, he sent a message in advance to his house to inform his wife and daughter of his homecoming. The messenger, on reaching the merchant's house, bowed down to the merchant's wife and gave them the most awaited news that the merchant and his son in law have reached Ratanpur. Lilavati had just finished doing her Satyanarayana Puja. She told her daughter to finish doing the prayers and then come and receive her husband and her father. Kalavati finished doing her quickly and without taking the prasad, left to meet her husband. The Lord got angry at her behavior, so he drowned her husband with the boat. When Kalavati did not see her husband, she was shocked and she fainted on the floor. It's by seeing his daughter in this state of affair and the sudden disappearance of the boat, the merchant was shocked. He prayed the Lord Satyanarayana, asked him for forgiveness and prayed to the Lord to take them out of this difficulty. The Lord then made an announcement. "O merchant, your daughter in a hurry to meet her husband has left my prasad. Hence, you cannot see her husband. Now, when she goes back and take the prasad with due respect and then returns, only then she will see her husband." On hearing this voice, Kalavati ran home, ate the prasad, and came back and met her husband. When the merchant saw this, he was very happy. The merchant then did Lord Satyanarayana's prayer and fast with his family every month. Finally, he had all the pleasures of life, and after death, he went to heaven. This chapter of Lord Satyanarayana सत्यनारायण स्वामी जी जो बरे दे श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायाम चतुर्थोऽध्यायः। बोल श्री सत्यदेव भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। सुवाच
अथान्य संप्रवक्षावे सद्धमन सतमहासे तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वापस एकदास वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्. Now chapter 5. Suji said, "O people, listen further to another story. A king named Tungadhwaj was famous for his generosity to his subjects, but he had to suffer a lot due to the disrespect he had shown to the prayer of Lord Shri Satyanarayana and his prasad, which he did not accept when it was offered to him. One day, when hunting in a forest, he sat down under a tree. There he saw a few villagers doing the prayer of Lord Sri Satyanarayana. The king saw all this, but due to his false ego, neither did he join them nor bow down to the idol of the Lord. When the villagers gave him the prasad, he did not accept it and went away from there. So when the king reached his kingdom, he saw that everything was destroyed and all his 100 sons were lying dead on the floor. The king realized that this had happened all due to his false ego. So thinking, he started walking towards the place where the villagers were doing their prayers. There with them, he did the prayers of Lord Sri Satyanarayana and had the prasad and charnamrita and put it in all his sons' mouth. By doing this, all his sons became all right. He got back all his wealth and comforts of life, and finally, in the end, after he died, he went to heaven. Anybody who keeps this fast with full faith and recite the prayers of the Lord Sri Satyanarayana, all his wishes will be fulfilled. With the grace of the Lord, he will get eternity. The wealthless will receive wealth and will go to heaven and finally will come out of the circle of the birth and death. In this way, whoever does Lord Sri Satyanarayana's prayer will be free from all sorrows and will ultimately reach heaven and get moksha. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami is over. Iti Sri Skanda Purane Revakhande Sri Satyanarayana Pratkatayam Panchamodhyayah. Bol Sri Satyadeva Bhagavan Ki Jai. Achyutam Keshavam Ramanayam Damodaram Vasudevam Sridharam Madhavam Gopinaram Janaki Nayakam Sri Ramachandram Bhaje Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Om Sri Satyadeva Bhagavan Ki flower is चलो जमवानी अब जमवाने माया बेट बोला जमवाने आओ जमवाने आओ प्रेमे जमारे जसोदा मैया प्रेमे जमारे जसोदा मैया जमवाने आओ जमवाने आओ कोवरिया बाट जुमे छे अगनाम भैया बाट जुमे छे अगनाम भैया कांगे उभा छे ग्वालो ने भैया द्वारे उभा छे ग्वालो ने भैया जमवाने आओ माखन में मिसरी जमो कन्हैया माखन में मिसरी जमो कन्हैया जमवाना जगलो जमवाना जगलो जिना श्रीया जमवाने आओ कानन की बीड़ी हो मुखे धरैया कानन की बीड़ी हो मुखे धरैया बंसी तुम्हारी बंसी बजैया बंसी
तुम्हारी बंशी बजैया जमाने आओ बंसी बजैया हो मैंने बसैया बंसी बजैया हो मैंने बसैया नाची उठे छे पूरी कहैया नाची उठे छे पूरी कहैया जमवाने आओ जमवाने आओ श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री सत्यदेव भगवान की जय कथा followed by art major program always followed by art तो ऑनलाइन वाला जे भी होय maybe they got the notifications right when we turn on the light एकाद भजन થઈ જશે एकाद भजन कोई गाई बोलो થઈ જશે किया તો એકાદ ભજન કોઈ સિંગ કરો તો થોડી વાર થઈ જશે कौन નો always major program I'll followed be by a art. look with you. गाना मान तो बदले से હું તો ગાઉં પણ आपको તૈયાર કરે ત્યાં हेलो गाओ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायण भगवान् गाते नहीं शबरी की तरह तुम गाते शबरी की तरह तुम गाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् कौन कहता है भगवान आते नहीं हम भक्तों की जैसे बुलाते नहीं हम द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं जय So some people join at 8 o'clock. Yeah, people join at 8 o'clock. That's why I'm just trying to say if somebody wants to sing a bhajan or something, because normally Aarti time is 8 o'clock. So if anybody wants to sing, please come. ગાવું છે તમારે આ બાજુ છે અંદર છે આ બાજુ ऊपर 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 Can you see how many people are online? Yeah. There's only one person. How many? One. They'll come at 8 o'clock. Yeah, 8 Four. o'clock people. Four hours. Kaun છે? Who is it? Usually Parimala se. Yes, you were right. Parimala. There is Vinay Vardhan ji's family and there is Pramila ji's family. Right, but that doesn't mean they know there is Aarti time. I
I never get a notification. I have to log in to see because I am not logged in the internet until 8 o'clock. I only come 5 minutes before 8, so I just get it in 8 o'clock. आज ये पूजा में कोई ज्यादा लग सकता है 8 o'clock की आरती के लिए लोग ज्वाइन करते हैं right? We should do it at 8 o'clock, right? Huh? Right. But people join at 8 o'clock if they don't know how to do it. How many people usually join today? 2 to 5. Sometimes 1 people, sometimes 0 people, sometimes. Yeah, but today is full moon day. Full moon कल नहीं था क्या? Yeah, बोले किसी राजा yesterday. Eclipse था. Yesterday was eclipse. It was beautiful. I came out at 11:30, but I didn't see anything. But I saw it online. So it is supposed to be very beautiful. Yes, yes. The next one is coming in November, right? 10 to 2. रात के 10 बजे से 2 बजे तक. मैंने नहीं, मैं 2 बार गई, मुझे नहीं दिखा. मेरे को याद था मगर मैं गई नहीं. कहाँ तो आप बोलो.
clean the only plate. Cleaning plate. Amana, yeah. Jaya Siya Ram, Janaki Raja Ram, Patita भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में जय अर्ज मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में यह कर्म भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में जीवन को मैंने सौंप दिया है दौर तुम्हारे हाथों में संसार पतन अब मेरा है भगवान तुम्हारे चरणों में प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में संसार सार है सार नहीं बाकी न रही अब भूख कहीं मैं हूँ संसार के बंधन में संसार तुम्हारे हाथों में यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में आँखों में सदा ये ध्यान रहे और मन चरणों में यह अंत समय की अर्जी है भगवान तुम्हारे चरणों में यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में यह बार मैं कहता हूँ आगे प्रभु आपकी मर्जी है यह भाव सभी भक्तन के है भगवान तुम्हारे चरणों में यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में यह अर्ज मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों
Well, good. Please, everybody come every full moon day because we would like everybody to support us. And then we are going to do Sundarkand every third Saturday. So next Saturday, yeah. So next Saturday will be Sundarkand 6 o'clock again. So please all come. 6 o'clock. 6 o'clock. Everything 6 o'clock. Morning. Now we are changing it. We are changing it because 6 are not there. We have to depend on our
musicians. So we are doing in the evening, 6 to 8. So please come. And the same thing, we have Mahaprasad for that day also next Saturday, which is the first of the time. So please join us and support. Aarti, Vinubhai. Hello. चलो आरती करिए। ओम नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। जय श्री कृष्ण नमस्ते एवरीवन। नाउ वी हैव संध्या आरती। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् गौरी श्री सत्य सच्चिदानंद भगवान की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री सत्यनारायण देव की जय श्री अम्बे माता की जय थैंक यू एवरीवन थैंक यू वेरी मच and please take online live Aarti over the YouTube camera first and then Saturday Hanuman chapter. and Saturday we have Sri Sundarkand Path evening at 6 o'clock. So 6 to 8 we have Sri Satyanarayana Sri Sundarkand Path followed by Aarti and Mahaprasad. हाँ, अच्छा.